Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is PTC, that is plant tissue culture, and we are going to learn root culture. So let us see contents. What is root culture? Types of root culture, protocol of root culture, significance of root culture, and example of root culture. So this is the content of our presentation. So let us see what is root culture. Root culture is defined as culture of excised radical tips of germinated seed or hairy roots induced by bacteria to grow under controlled conditions to extract bioproducts. So this is the definition of root culture. So here you can understand that root culture is nothing but culturing of germinated radical of the seed or growing hairy roots by the use of bacteria, isn't it? So here bacteria is also used to induce hairy root development, and from that roots some byproducts or bioproducts or secondary metabolites are obtained. So let us see what types of root cultures are there. So here you can see root culture. So primarily there are two types of root cultures. One is normal root tip culture, that is roots from plant or seeds. So this is one method from where we can obtain a root for the culture, and another is hairy root tip culture. So these two methods are available for root culture. Normal root tip culture can be done with the help of radical tip, that is a seed radical, और रूट फ्रॉम प्लांट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट का जो रूट होता है वो रूट का टिप हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीड को जर्मिनेट करके उसका रेडिकल जो होता है वो भी हम रूट कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो इन हेरी रूट कल्चर, hairy root tip culture, a bacteria called Agrobacterium rhizogenes is used, and this bacteria induces formation of hairy roots, and this is also one of the latest method for developing a root culture. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल रूट टिप कल्चर जो है वो किस प्रकार से किया जाता है. सो हियर इज अ प्रोटोकॉल फॉर रेडिकल रूट कल्चर. द सीड्स कैन बी जर्मिनेटेड. So here is a seed, and you can see here seed is made to germinate, and the seed germinates and it produces this radical. Okay, now this seed is sterilized, because sterilization plays a vital role in PTC, that is a plant tissue culture. So it is sterilized, then it is first of all washed with distilled water. So this sterilization process is carried out, and it is first washed with distilled water.
Then it is washed with 70% alcohol for 1 minute, isn't it? So here you can see sterilization is carried out in this way. 70% अल्कोहल, 1 मिनट के लिए इसको 70% अल्कोहल में वॉश कर लिया जाता है. Then here you can see 0.1% mercury chloride or 10% sodium hypochlorite is used. So here you can see the seed can be sterilized with this chemicals for 10 minutes. Then it is washed with distilled water for 3 to 4 times. Then next step is under sterile condition. This radical or seed is treated and processed. That is inoculation. Under sterile condition, the seed is used and its radical is used for inoculation on basal liquid whites medium. It is a semi-solid media, and this media is nothing but the nutrients. This whites medium is nothing but nutrient, and this nutrient is supplied for the growth of this root tip cells. So next is incubation. Once this radical is inoculated on whites media, and then it is incubated in dark at 25 degree centigrade. So you can see that proper nutrient is provided, and it is placed in incubation chamber in dark for 25 degrees centigrade. This is the thing that is required. Then 10 millimeter apical tips are taken as explant from the proliferated roots. So naturally, when the radical cells are provided with this particular nutrient medium and incubated in dark at 25 degrees centigrade, so there is development of proliferation of root, and from that root 10 millimeter apical tips are taken as explant from that proliferated root. तो इस प्रकार से हम वो जो रूट होता है उसका टिप यूज़ किया जाता है. उसके बाद में ये इनोकुलेट किया जाता है लिक्विड मीडियम में, इज़न्ट. ये जो होता है वाइट्स मीडियम, ये सेमी सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है. तो ये लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड इनक्यूबेटेड इन डार्क एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. ये उसका अगला स्टेप है. और इस प्रकार से जो रूट डेवलप होता है, धीरे धीरे इसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, और प्रोलिफरेशन होने के बाद इट ग्रोज ग्रेजुअली. इसका डेवलपमेंट होने के बाद इट इज़ सब कल्चर्ड. दैट रूट विच इज़ ग्रोइंग इन द मीडिया is subcultured and multiplication is done in culture medium. तो उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, वो रूट को बढ़ाया जाता है. इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फ्लास्क के अंदर इस प्रकार से ये रेडिकल की सेल्स से ये रूट इतना बढ़ जाता है इन द फ्लास्क, इन द मीडिया. सो इस प्रकार से हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ये जो रेडिकल है, सीड का रेडिकल
from this radical we can develop such a root, and we can carry out the multiplication of this root in the media. And in this media, this root secretes secondary metabolites, and these secondary metabolites accumulate in this media, and from this media secondary metabolites can be extracted. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो रूट है, ये जो रेडिकल है, इससे ये इस प्रकार के रूट हम डेवलप कर सकते हैं इन conical flask and in particular media. So this is the root tip culture. इस प्रकार से ये रूट टिप कल्चर होता है. दूसरा मेथड जो है उसे कहते हैं हेरी रूट टिप कल्चर, HR/ transformed root culture. So this is the advanced method, and in this method you will find that a bacteria is used. Hairy roots are differentiated cultures of transformed roots generated by the infection of wounded higher plants with Agrobacterium rhizogenes. This pathogen causes the HR disease, hairy root disease, leading to the neoplastic growth, that is uncontrolled growth of roots that are characterized by high growth rate in hormone-free media with genetic stability. So this is the specialty of this hairy root tip culture, and it is called transformed root culture, and this root culture is mediated by Agrobacterium rhizogenes. ये Agrobacterium rhizogenes जो होता है, it is a gram negative bacteria which is present in the soil, and this bacteria is used to induce a hairy root development, and from that hairy roots we can extract secondary metabolites that are important for our medical purposes and other purposes. तो इस प्रकार से ये हेरी रूट टिप कल्चर कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी द स्टेप्स carried out for this Agrobacterium rhizogenes induced hairy root growth in chickpea. तो ये जो ग्राम होता है, चना, जिसे मराठी में हरभरा असं म्हटलं जातं, त्याच्यावरती आपल्याला हा प्रयोग करता येतो. सो हिअर यू कॅन सी फर्स्ट ऑफ ऑल gram seeds are germinated, and these gram seeds are placed in nutrient media. So gram seeds, these seeds are sprouted. चना जो होता है उसका ये जर्मिनेशन होगा यहाँ पे. देन these root or radicals are wounded. ओके ये जो होता है तो इसको एक किस्म का wound करना पड़ता है, जख्म करना पड़ता है. So wounding by cutting the radicals. So these radicals are cut. So here you can see these radicals are cut with the scalpel. यहाँ से ये रेडिकल कट करेंगे तो इसको यहाँ एक wound हो जाएगा, यानी कि एक जख्म हो जाएगा. And from that wound we can inoculate or introduce the bacteria. So here you can see this radical is cut. अभी ये जो होता है यहाँ पे स्कैल्पेल के माध्यम से इसको यहाँ पे कट किया गया, तो यानी कि यहाँ पे एक किस्म की ऊंट तैयार हो गई, एक जख्म तैयार हो गया, यानी कि ओपन एरिया तैयार हो गया फॉर इनोकुलेशन ऑफ Agrobacterium rhizogenes. Isn't it? So this is the procedure. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद में क्या किया जाता है. अभी यहाँ ये इसको कट करने के बाद इनोकुलेशन विथ सस्पेंशन ऑफ Agrobacterium rhizogenes. सो ये जो कट पोर्शन है रेडिकल का, तो इसमें ये हम
एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस नाम का ये जो बैक्टीरिया है जिसका सस्पेंशन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनोकुलेट कर रहे हैं. सो दिस सस्पेंशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस विल इन्फेक्ट दिस पोर्शन. अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया, ये सस्पेंशन है, ये कल्चर मीडिया के अंदर डालने के बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस है ये उंडेड पोर्शन में से ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस इसको इन्फेक्ट करेंगे, ये जो रेडिकल है इसको इन्फेक्ट करेंगे, isn't it? So this agrobacterium will infect this radical through this wounded region. तो यहाँ पे एक जख्म जो हमने किया है इसके माध्यम से ये एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा. ठीक है, सो ये स्टेप है. नाउ हियर यू कैन सी these radicals और these gram radicals are cut. इसको यहाँ पे कट करने के बाद ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस इसके अंदर डाल दिया है. ये मीडिया है, petri dish containing media, and in this media we have inoculated this media with agrobacterium राइजोजेंस. तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कर दिया गया और ये बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट करेंगे अभी ये रेडिकल को. सो दिस बैक्टीरिया ऑन सेमी सॉलिड वाइट्स मीडियम, इज इट? ये वाइट्स का मीडियम है, जो वाइट नाम का एक शास्त्रज्ञ था तो उन्होंने ये कंपोजिशन बनाया है. सो ऑन दैट मीडिया वी हैव इनोकुलेटेड agrobacterium rhizogenes. So this bacteria cause infection. Now this bacteria cause infection to the wounded radical. So here you can see this is the gram seed and this is a plumule and this is radical. So this radical is infected and here you can see there are hairy root development. अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो रेडिकल है तो ये यहाँ से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हेयरी रूट्स आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस. और जैसे भी इसको इन्फेक्शन होगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का तो हेयरी रूट्स डेवलप होना यहाँ शुरू हो जाते हैं और बहुत सारा ये हेयरी रूट्स जो है प्रोलिफरेट हो जाएगा, बहुत सारा हेयरी रूट्स यहाँ पे डेवलप होगा. और जैसे भी ये रूट डेवलप होगा तो इसको लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है. हियर यू कैन सी दिस ग्राम सीड एंड द रेडिकल इज नाउ प्रोड्यूसिंग एबंडेंट हेयरी रूट्स. अब ये पूरा प्रोलिफरेशन हो गया है, isn't it? ये रेडिकल से बहुत सारे हेयरी रूट्स निकल आए हैं इन लिक्विड मीडिया. सो इन दिस वे यू कैन सी दिस इज द हेयरी रूट कल्चर एंड दिस हेयरी रूट्स डेवलप्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो ये रूट के अंदर जो भी मेटाबोलाइट्स डेवलप हो गए तो ये सारे मेटाबोलाइट्स ये लिक्विड मीडिया के अंदर सिक्रेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए. और ये जो लिक्विड मीडिया है इसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स ये रूट्स के अंदर से सिक्रेट हो गए हैं, isn't it? This hairy roots produces secondary metabolites और बायोकेमिकल्स. ये पूरे बायोकेमिकल्स ये लिक्विड मीडिया के अंदर इकट्ठा हो गए और वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर डिफरेंट पर्पसेस, pharmaceutical or other purposes. So in this way you can see this hairy root development is done with the help of agrobacterium rhizogenes. So these are the steps and this is the protocol for this development of hairy root. Now here you can see this development of hairy root can be done in this way. So here you can see this
plant, and its one leaf is plucked here. एक पत्ता लिया गया, इसको उंड किया गया. अब इसके ऊपर एक ज़ख्म किया जाता है, एक उंड किया जाता है, और ये ज़ख्म करने के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ पे उसको इन्फेक्ट किया जाता है. सो हियर आई हैव शोन द बैक्टीरिया. सो हियर यू कैन सी दिस बैक्टीरिया with its RI plasmid, isn't it? तो ये RI plasmid जो होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का जो प्लाज्मिड है उसको हम RI plasmid कहते हैं. एंड दिस प्लाज्मिड, और ये जो है तो ये क्रोमोसोम, ये यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, प्राइम जेनेटिक मटेरियल, और ये प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का. सो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो होता है, ये उंडेड लीफ को, एक ये पत्ते को एक ज़ख्म किया जाता है, और वो ज़ख्म जो होता है, उंड जो होती है, उसको इसका इन्फेक्शन किया जाता है. इज़न्ट इट? इन्फेक्शन विथ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस टू द उंडेड लीफ, जैसा कि मैंने बताया आपको. एंड देन यू कैन सी हियर दिस लीफ हैज़ जनरेटेड hairy roots. So here you can see the leaf is showing ample development of hairy roots. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पत्ता जो है, isn't it? ये लीफ है, ये लीफ को एक उंड करने के बाद और उसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस से इन्फेक्ट करने के बाद इस प्रकार से रूटिंग हो जाता है, हेरी रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. सो इस प्रकार से वी कैन इंड्यूस रूट टिप कल्चर और हेरी रूट टिप कल्चर. So these roots generate and produce different secondary metabolites, and these metabolites are very important economically that we can use. तो इस प्रकार से आप देखें कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड हेरी रूट प्रोडक्शन होता है. तो इसमें जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, सो दीज आर द स्टेप्स. लीफ ऑफ द प्लांट आइसोलेटेड एंड स्टरलाइज्ड, ये लीफ निकाला जाता है, उसको स्टरलाइजेशन किया जाता है. देन leaf is wounded with scalpel so as to pave way to agrobacterium rhizogenes into the leaf cells. इसको जख्म किया जाता है, और इसके अंदर वो जख्म जो होता है उसके मार्फत ये बैक्टीरिया जो है तो इसको इन्फेक्ट करेगा. Isn't it? The bacteria infect and induce leaf cells to produce roots. So here you can see this wounded leaf, and that is infected with the help of agrobacterium rhizogenes produces hairy roots. Then the root produce desired secondary metabolites. So these roots, ये root के अंदर फिर secondary metabolites produce हो जाते हैं जो हमारे बहुत सारे काम आते हैं. The secondary metabolites could be produced from the media where the rooting took place. तो जो मीडिया के अंदर ये हम हेरी रूट्स डेवलप करेंगे, तो ये मीडिया के अंदर पूरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो प्रोडक्ट इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए. देन वी कैन एक्सट्रैक्ट और सेपरेट दिस मेटाबोलाइट्स फ्रॉम दिस सेकेंडरी hairy roots. So in this way you can see agrobacterium mediated hairy root production. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये दो किस्म के रूट कल्चर्स है, isn't it? So agrobacterium rhizogenes integrates with plant DNA and induce neoplastic rooting. तो ये क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का जो प्लाज्मिड होता है और उसके अंदर जो जीन होता है, isn't it? जो डीएनए होता है, दैट डीएनए इंटीग्रेट्स विथ प्लांट जीनोम. तो प्लांट का जो जीनोम होता है उससे उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और फिर वो उसका जो फंक्शन है, ये डीएनए जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस से आता है, वो डीएनए प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्रिएट करना शुरू कर देता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज द लीफ, एंड दिस लीफ इज वुंडेड, isn't it? यहाँ पे लिखा है देखो, दिस लीफ इज वुंडेड. तो वुंडेड प्लांट सेल प्रोड्यूस
acetylsyringone. So acetylsyringone is a biochemical secreted by the leaf. जब ये लीफ को एक किस्म का ऊन तैयार करोगे, एक किस्म की इंजरी करेंगे, तो ये इंजरी जब होती है प्लांट को, तो ये जो सेल्स हैं यहाँ के जो इंज्योर्ड है, वो क्या तैयार करेंगे? एक बायोकेमिकल तैयार करेंगे. द नेम ऑफ द बायोकेमिकल इज एसिटोसिरिंगॉन, इजंट इट? और ये जो है एसिटोसिरिंगॉन, ये एक्टिवेट करता है वायरल जीन्स को. जो बैक्टीरिया जो है ना, दिस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इसका जो डीएनए है इसको एक्टिवेट करता है दिस एसिटोसिरिंगॉन, इजंट इट? और फिर इन्फेक्शन हो जाता है. दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट. सो हियर यू कैन सी एग्रोबैक्टीरियम सेल, उसका ये प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर ये उसका यहाँ डीएनए होता है, टी डीएनए जिसे कहते हैं. तो ये जब प्लांट को इन्फेक्ट किया, ऊन किया, फिर ये ऊन करने के बाद वो ज़ख्म जो है, वो ज़ख्म के अंदर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, और इसका जो डीएनए है वो प्लांट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा. जैसे यहाँ बताया, देखो प्लांट सेल का ये टी डीएनए है coming from the bacteria, and this tDNA integrates with this plant cell genome, isn't it? So here you can see the copy of tDNA is transferred and integrated into a random set in the plant chromosome. तो plant का जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया का डीएनए, पीस ऑफ डीएनए और tDNA इंटीग्रेट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है. और ऐसा होने के बाद synthesis of auxins, cytokinins, opines and root formation occur. So this process took place there, isn't it? क्या होता है इन्फेक्शन होने के बाद? This thing happens. Synthesis of auxins, cytokinins, opines and root formation occur, isn't it? So इस प्रकार से वो hairy root develop हो जाता है. So that is the mechanism, isn't it? This leaf is wounded, and after wounding, this agrobacterium rhizogene is inoculated, and infection is done with this bacteria, and then bacterial DNA, that is tDNA, a piece of DNA, integrates with the plant cell DNA, and then this plant cell automatically develops these auxins, cytokinin, opines, and there is formation of hairy root. तो ये मैकेनिज्म होता है, और उसकी वजह से यू कैन सी देयर इज hairy root development. So here I have shown this bacteria, that is Agrobacterium rhizogenes. Here you can see Agrobacterium rhizogenes. So this is the cell of the bacteria, this is the main chromosome of the bacteria, and this is plasmid, that is called RI plasmid. Isn't it? This is the virulence gene, and this is the T gene. T means transfer DNA, and this T DNA is transferred to the plant cell, and when it enters into the plant cell, it get integrated or incorporated into the DNA of plant. So here you can see this bacterial DNA is introduced or incorporated into the genome of plant cells. So tDNA integrated, and there is synthesis of opines, isn't it? These are the biochemicals produced by this Agrobacterium rhizogenes DNA, and this synthesis of opine causes rooting or hairy root development. तो इस प्रकार से ये जो natural process of infection to the plant and production of hairy root is utilized in plant tissue culture. So in this way you can see that these plant cells can be induced to produce hairy roots, and from that hairy root secondary metabolites can be extracted. So that is the mechanism. So in this way you can see here this root culture. So what is the significance of this process, isn't it? This process provides useful information of carbohydrate metabolism,
role of minerals, vitamins in root growth. So here this root culture or hairy root culture or adventitious root culture or culture of root tips from radical helps to understand the mechanism and physiology of carbohydrate metabolism, रोल ऑफ मिनरल विटामिन्स इन रूट ग्रोथ. तो ये रूट के डेवलपमेंट में ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, मिनरल का रोल क्या होता है, विटामिन का रोल क्या होता है, इसका स्टडी करने के लिए ये रूट कल्चर का उपयोग किया जाता है. दैट इज़ द थिंग. It is also useful for understanding root shoot growth in relation to growth hormones. तो यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है रूट कल्चर कि रूट और शूट का रिलेशन क्या है वाइल द प्लांट ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, और हार्मोन्स का रोल क्या है, इसका स्टडी करने के लिए ये रूट कल्चर किया जाता है. ये भी एक उसका सिग्निफिकेंस है. सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसा मैंने बताया कि रूट के अंदर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तैयार किए जाते हैं, isn't it? Some metabolites that are useful for human beings or for the different purposes. तो ये secondary metabolites can be extracted from these root cultures. For example, vincristine, atropine, chiconin, nicotine, etc. These are the secondary metabolites produced in roots of some plants, and these metabolites can be used in pharmaceutical and medicine. तो ये हमारे उपयोग की चीज़ है. यहाँ पे हम ये बायोकेमिकल्स यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर रूट कल्चर करते हैं, isn't it? So that is the thing. Then understanding of root nodule formation in leguminous plants meant for nitrogen fixation. As you know that there are some plants, leguminous plants, that produce root nodules, and these root nodules plays vital role in nitrogen fixation. So this nodule formation process can be understood through root culture. root culture के माध्यम से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट में किस प्रकार से होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस नोड्यूल फॉर्मेशन. सो ये स्टडी करने के लिए भी रूट कल्चर का उपयोग होता है. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है. समझो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इन विट्रो रूट बाय प्रोडक्ट्स. सो रूट बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जैसे कि विनक्रिस्टिन. ये विनक्रिस्टिन नाम का बायोकेमिकल है, isn't it? It is a बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट. ये विनक्रिस्टिन रूट के अंदर डेवलप होता है और ये इट इज़ अवेलेबल इन मार्केट विद द ब्रांड नेम ऑफ अनकोविन. अनकोविन नाम से ये विनक्रिस्टिन मार्केट में अवेलेबल है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथेरेंथस रोजियस रूट्स. कैथेरेंथस रोजियस नाम का जो प्लांट है उसके रूट्स में से दिस मेडिसिन इज़ ऑब्टेन्ड विच इज़ यूजफुल इन कैंसर ट्रीटमेंट. तो कैंसर के ट्रीटमेंट में ये काम आता है. सो यू आर फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर प्लांट कॉल्ड कैथेरेंथस रोजियस, जिसको मराठी में सदाफुली कहा जाता है. एक कॉमन प्लांट है. तो इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट के अंदर विनक्रिस्टिन नाम का बायोकेमिकल तैयार होता है. तो इसीलिए ये जो बायोकेमिकल है विनक्रिस्टिन, इट इज़ यूज़फुल इन कैंसर ट्रीटमेंट. तो आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है, तो उसके ऊपर इलाज करने के लिए विनक्रिस्टिन काम आता है. और ये कैथेरेंथस रोजियस नाम की जो प्लांट है उसके रूट में डेवलप होता है. इसलिए इसके रूट का कल्चर लेबोरेटरी में किया जाता है और
On large scale, we can procure this vincristine from this root culture of the Catharanthus roseus. So in this way, another root secondary metabolite called chiconin. It is obtained from Lithospermum erythrasone. This is a medicine which is active against HIV, isn't it? Human immunodeficiency virus. तो एड्स जो होता है वो एड्स के अंदर ये HIV से एड्स बनता है, तो ये एड्स के अंदर भी ये रूट से जो बायोकेमिकल हमें प्राप्त होता है लिथोस्पर्मम erythrorazone. So this is the plant, and this plant roots produce this particular biochemical called chiconin, and this chiconin is useful in the treatment of AIDS. So these are the examples, isn't it? These two are the examples for the production of biochemicals through root. So therefore, root culture is important in plant tissue culture. Looking at this example, you can understand the significance of root culture. So this is the thing that you have to understand. So friends, you have to see this presentation repeatedly, and you have to prepare your own notes. Thank you.